Hello everyone, I am Ruchi. Welcome to Recon classes. I love to teach mathematics, the fun game of numbers. Today I will teach you a lesson on Heron's formula part 2 for class 9th CBSE. Let's start. In part 1 of this chapter, we shall study Heron's formula. So what is Heron's formula? If ABC are the three sides of triangle ABC and small s equal to A plus B plus C divided by 2, then area of triangle ABC equal to under the root of small s into s minus A into s minus B into s minus C, where s is called the semi-perimeter of the triangle. So we have studied this formula in part 1. Now, application of Heron's formula in finding area of quadrilaters. So first example is find the area of a quadrilateral ABCD in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter, DA equal to 5 centimeter and AC equal to 5 centimeter. So the diagonal AB, the diagonal AB divides the quadrilateral ABCD into two triangles ABC and triangle ACD. So therefore we can say that area of the quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. So this is equation number 1. So now here for triangle ABC, in triangle ABC is three sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. So we can write S equal to, S is A plus B plus C by 2. So 3 plus 4 plus 5 divided by 2. This is equal to 12 by 2 centimeter or 6 centimeter. So therefore area of the triangle ABC equal to under the root S. S is 6 into S minus A into S minus B into S minus C centimeter square. So this is equal to under the root 6 into 3 into 2 into 1 equal to 6 centimeter square. So this is equation number 2. This is our equation number 2. Now next one we have area of triangle ACD. Now area of the triangle ACD. So ACD, for ACD we have A equal to 5, B equal to 5 and C equal to 4. So we have three sides 5, 5 and 4. So therefore S equal to 5 plus 5 plus 4 divided by 2, or we can write this is equal to
14 divided by 2 centimeter equal to 7 centimeter. यहाँ पे लिख सकते हैं now in ACD. So area of the triangle ACD equal to, under the root, S is 7, 7 into 7 minus 5 into 7 minus 5 into 7 minus 4 centimeter square, and this is equal to, under the root, 7 into 2 into 2 into 3 centimeter square equal to 2 root 21 centimeter square, or 2 into root 21 4.6 centimeter square, or equal to 9.2 centimeter square. So this is our equation number 3. Therefore, from equation number 1, 2 and 3 we get area of the quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABC and area of triangle ACD. So area of triangle ABC is 6 centimeter square plus area of triangle ACD is 9.2 centimeter square, and this is equal to 15.2 centimeter square, and this is our answer. Clear? क्वाड्रिलेटर को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया एंड उससे हमने फिर उसका टोटल एरिया निकाल लिया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper shown in figure. Find the total area of the paper used. So in this figure, all sides are given and हर एक पार्ट को 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया कि अलग अलग पार्ट्स ये डिवाइड हो गए. सो जो पूरे एरोप्लेन के पेपर जितना यूज़ हुआ है उनका एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3 देन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 5. तो ये 5 फिगर हैं. पाँचों को नाम दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5. इनके अलग अलग एरिया निकालेंगे और हम उन सबको सम कर देंगे और सारी साइड्स हमें गिवन है. सो फर्स्ट एरिया 1. फर्स्ट इज ट्रायंगल and we have 3 sides 5 5 and this side is 1 centimeter and this is 5 centimeter. So area 1 you can write for triangle 1 as equal to 5 plus 1 divided by 2 equal to 11 by 2 centimeter equal to 5.5 centimeter. So area 1 equal to under the root 5.1 5.5 minus 5 5.5 minus 5 and 5.5 minus 1. So we get under the root 5.5 into 0.5 into 0.5 into 4.5, and this gives under the root 6.1875, and approximately this is equal to 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब हम अप्रोक्सीमेटली के लिए बात करते हैं तो इक्वल टू की जगह इस तरह का सिंबल लगा देते हैं. सो दिस इज एरिया 1.
then area second, and second is rectangle, uh, area of rectangle. So second one, area of rectangle is length is 6.5 and breadth is 1 centimeter. So this is equal to area of rectangle equal to L into B, and L equal to 6.5 and B equal to 1 centimeter. So this gives 6.5 centimeter square. Again, area third. Area third is trapezium. Trapezium equal to area of trapezium, and area of trapezium equal to 3 into area of इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर ये इस तरह से, ये तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला नीचे वाली साइड पूरी 2 है, इसका मिड पॉइंट लेंगे तो ये सब 1 हो जाएगा. तो सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle with side 1 centimeter. So this is equal to 3 into area of equilateral triangle is under root 3 by 4 into side square. Itna centimeter square. So this gives 5.196 upon 4 centimeter square, और this is equal to 1.3 centimeter square approximately. ये भी approx. Now area 4 and 4 plus 5. 4 plus 5 दोनों फिगर सेम है, दोनों ट्राइंगल्स हैं. दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? दोनों में 90 डिग्री बन रहा है. तो बेस कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी हो गई? 1.5 सेंटीमीटर. तो ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं. सो एरिया ऑफ फिगर 4 and 5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस गिव्स 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस गिव्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वी कैन राइट दैट देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द paper used equal to area of part 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So this gives 2.5 plus 6.5 plus 1.3 plus 9 centimeter square, and this is equal to 19.3 centimeter square, and this is our answer. क्लियर? इस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स का एरिया निकाल कर उसको पूरे एरोप्लेन का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. The floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of a triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. So find the cost of the polishing the tile at 50 paisa per centimeter square. ये वाली तो एक फ्लोरल डिज़ाइन हो गई, एंड कितने टाइल्स यूज हुए हैं? 16. हर एक टाइल कितना है ये मैंने अलग से फिगर बना दिया है कि ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर.
तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी हमें तीनों साइड्स मालूम हैं। जब हमें तीनों साइड्स मालूम है तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो फॉर ईच ट्रायंगुलर टाइल वी हैव एस इक्वल टू, एस कितना हो जाएगा 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 centimeter, and this gives 36 centimeter. Now therefore area of each tile, so S is 36, so 36 into 36 minus 35 into 36 minus 28 into 36 minus 9 centimeter square. This gives under the root 36 into 1 into 8 into 27 centimeter square, and this gives 36 under the root 6 centimeter square. Therefore, area of 16 tiles, there are 16 tiles, so the area of 16 tiles equal to 16 into 36 under root 6 centimeter square, and this gives this is the area of the triangle. And now we find cost of polishing. So therefore cost of polishing is 50 paisa, or we can say 1/2 rupees. So in rupees we can write cost of polishing is rupees 1/2 into 16 into 36 under root 6, and this gives rupees 288 under root 6. Substitute the value of under root, we get rupees 288 into 2.45 equal to rupees 705.60. This is our answer. क्लियर? एक टाइल की पहले एरिया निकाल लिया, देन हमने 16 का निकाल लिया, फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कैलकुलेट की. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of clothes of two different color, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Now here each triangle is isosceles triangle because two sides are equal. So each triangle is isosceles with side A equal to 50 centimeter, B equal to 20 centimeter and C equal to also 50 centimeter. So therefore cloth required for each color. Cloth, first we find S. So S equal to small s equal to 50 plus 20 plus 50 upon 2 centimeter equal to 120
upon 2 centimeter equal to 60 centimeter. So S is 60 centimeter. So area calculate करेंगे तो therefore cloth required for each color यहाँ पर 5 हैं, 1 2 3 4 5 पीसेज हैं. सो 5 पीसेज के लिए 5 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, मतलब हर एक कलर के 5 पीसेस बनेंगे. तो 5 इंटू एरिया, ये हाफ अपन को अम्ब्रेला दी हुई है. अगर फुल अम्ब्रेला करेंगे तो हमारे पास हर एक कलर के 5 ट्राइंगल्स होंगे. सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्राइंगुलर piece. So this is equal to 5 into area 1 triangle का एरिया निकालेंगे अंडर द रूट. S is 60, so 60 minus 50 into 60 minus 20 into 60 minus 50 centimeter square, and this is equal to 5 into under the root 60 into 10 into 40 into 10 centimeter square, and this gives 1000 under the root 6 centimeter square. Thus we can say that thus 100 root 6 centimeter square cloth of each color is required. This is our answer. Now next one. A kite in the shape of a square with diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to made up of a 3 different shade shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? Use under root 5 equal to 2.24. So in this case we need 3 papers. So A, B, C, D. Let A, B, C, D be the square. पतंग कैसी होती है? स्क्वायर. तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड सी ई एफ बी एन आइसोसेलेस triangle. Okay, and let the diagonals intersect each other at O. Then AO equal to half of diagonal AO. Half of diagonal is 32 centimeter. So AO equal to 16 centimeter. Now area of shaded portion 1. Area of triangle ABD. Area of shaded portion. Shaded portion 1 part 1 फिगर में दिखाया हुआ है. शेड एक लाइन बनी है, अलग से एक पोर्शन है. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एंड अपन उसको 1 कह दें. सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
प्लेन पोर्शन और अनशेडेड प्लेन पोर्शन, प्लेन पोर्शन सेकेंड, दोनों सेम होंगे, स्क्वायर है उसको डायगनली कट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों ट्राइंगल हैं तो क्या करें, हाफ इनटू बेस, बेस इज 32 एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस गिव्स 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पोर्शन थर्ड पोर्शन कौन सा है, ये नीचे वाला. सो एरिया ऑफ पोर्शन 3 and this is a triangle. So for this S is तीनों का sum, तो first we write for portion third, we can write for portion third S is equal to 6 plus 8 plus 6 divided by 2 centimeter, and this gives 20 upon 2 centimeter equal to 10 centimeter, and area of portion 3 equal to, under the root S is 10, so 10 into 10 minus 6 into 10 minus 8 into 10 minus 6 centimeter square, and this is equal to, under the root 10 into 4 into 2 into 4 centimeter square, and this is equal to 4 into 2 root 5 centimeter square equal to 8 root 5 centimeter square, and this gives value of root 5 is given, so 8 into 2.24 centimeter square equal to 17.92 centimeter square. Thus, the papers of 3 shades required are 256 centimeter square, again 256 क्योंकि दो पोर्शन के एरिया सेम है, एंड 17.92 centimeter square. This is our answer. Now sixth one. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 centimeter and 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. So here parallel lines are AB and CD. So AB equal to 25 centimeter and CD equal to 10 centimeter. ये हमें given है. And non-parallel sides are AD and BC. So AD AD equal to 13 centimeter and BC equal to 14 centimeter. Sorry. So let ABCD be the trapezium in which given क्या है, AB equal to 25 centimeter, CD equal to 10 centimeter, AD equal to 13 centimeter, and BC equal to 14 centimeter. All these are given. Now draw EC parallel to AD. ये हमने EC ड्रॉ कर लिया,
E and C ड्रॉ किया AD के पैरेलल and CP perpendicular to EB. क्लियर? ये हमने ड्रॉ किया. नाउ CE इक्वल टू AD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. क्योंकि हमने इसको उसके पैरेलल ड्रॉ किया है AD के, तो ये इक्वल हो जाएगी. एंड EB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB माइनस AE. So AB equal to 25 meter and AE equal to 10 meters. So this is equal 25 minus 10 meter equal to 15 meters. तो ये हमारे पास 15 meter हो गया. Clear? Now we find the area. So therefore area in triangle BCE we have A equal to 15 meter, B equal to 14 meter and small c equal to 13 meter. So in this triangle BCE we have S equal to 15 plus 14 plus 13 divided by 2 meter, and this gives 21 meters. Now area of triangle BCE area of triangle BCE equal to S is 21 into 21 minus 15 into 21 minus 14 into 21 minus 13 meter square, and this gives under the root 21 into 6 into 7 into 8 meter square, and this gives, फैक्टर्स कर लेते हैं. बहुत इजी है. इसको 21 को हम फैक्टर कर लें. 7 इंटू 3 6 के किए, 2 इंटू 3 7 ऐसा का ऐसा, 8 के करे 2 इंटू 2 इंटू 2. नाउ 2 टाइम्स 7 है, 7 बाहर आ जाएगा. 2 टाइम्स 3 है तो एक 3 आ जाएगा, और 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट हट जाएगा एंड वी हैव 84 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE. नाउ वी नो दैट अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE equal to half into base into height. So half into base equal to BE into height is CP. इसमें देखिए फिगर में ट्राइंगल BCE में बेस इज EB एंड हाइट इज CP. So height is CP. This gives area equal to 84 equal to half, BE equal to 15 and into CP. CP is our height. So CP equal to 2 into 84 upon 15 meter. So this gives 56 upon 5 meter. So this is height. Now we find area of parallelogram. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का सिंबल ये हो जाता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD इक्वल टू बेस इनटू हाइट, एंड बेस इस वाले पैरेललोग्राम में बेस इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मीटर, एंड हाइट हमने अभी कैलकुलेट की है. सो बेस इक्वल टू 10 इंटू हाइट इज 56 upon 5, इतना मीटर स्क्वायर, एंड दिस गिव्स 112 मीटर स्क्वायर. Thus area of
trapezium ABCD equal to area of parallelogram AECD plus area of triangle BCE. दोनों के एरिया को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन वी हैव 112 मीटर स्क्वायर प्लस 84 मीटर स्क्वायर. दिस गिव्स 196 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर. क्लियर? तो ये तो हेरन्स फार्मूले का सेकंड पार्ट था. फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगी. Hope you enjoyed the lesson today. If you have any problem or doubts related to this topic, please comment below. I will try to respond to each one of your questions. I will be uploading next video soon. Once again, please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.